We live in deeds, not ears, in thoughts, not breaths, and in feelings, not in figures on a dial. Dr. Yogesh Chandra Govil was a benevolent human being, a great teacher, and an academician par excellence. He was a gentleman to the core, who would stand for the right whatever be the opposition. He was our mentor at Georgian Hope. So here we are to pay homage to a man of action who, though not present between us now, but has left an indelible impression on our lives. We begin with his early life and academic milestones. Dr. Yogesh Chandra Govil was born on 12 September 1956 in Jodhpur. His father, Mr. Satyaprakash Govil, was the chief finance and accounts officer, and his job required him to frequently change cities. So, Dr. Govil had his primary education at Doon Cultural Center, Dehradun. He did his high school at Parker Inter College, Moradabad, and then he did his intermediate from Bareilly. On the basis of intermediate marks, he took engineering at G.B. Pant Technical University, Pantnagar. But as the destiny would have it, 1 week later, he cleared the PMT, and with intense passion for serving humanity, he immediately left engineering and joined KGMC in 1974 batch. He remained near the top of his class throughout and passed his MD in Pediatrics in 1983 with a gold medal. Then, with his desire of serving the nation, he joined the Indian Army in 1984. For this, he underwent a 6 month training in Lucknow and was posted as Captain Y.C. Govil at Military Hospital, Amritsar, Kant. The number of medicines supplied were limited in the army, but Dr. Govil was very precise in prescribing the medicine and was strictly against giving any medicine which would harm his patient or would not produce the desired effect. As a result, when he had an option to pursue his passion for teaching the medical students, he quit army and joined here in KGMC in September 1986. He served as faculty here till his death in January 2012 at various posts of lecturer, assistant professor, associate professor, and professor for the last 26 years. Let's peep into his splendid clinical contributions. Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully. And so was the case with Dr. Govil. From his early days in the department, he was clear that he wanted to develop the specialty of pediatric intensive care. He followed his goal purposefully and applied for a fellowship in pediatric intensive care under the International Medical Scholar Program, for which he competed internationally. He spent 3 months at Loma Linda University in California and another 3 months at Children's Hospital of Michigan, USA. After his return to India, he followed his dream, writing up and pursuing his proposal to create the first pediatric intensive care unit in the state. This dream finally took shape with blessings of the head of department, Professor P.K. Mishra. The PICU was inaugurated in 2001. Dr. Govil, when he joined, right from then, I think he wanted to look after the specialty of pediatric intensive care. And he went about this in a very organized manner. He went for a training in USA for the same thing, and even before that, he had sort of initiated the move to build a new PICU. With his efforts, he really left no stone unturned to try to get finances from this. He was running around to and fro for that, and he did succeed in that. So that finally in 2001, a grand PICU was inaugurated in our department. And he did it with such a passion. Every tile which is there, every stone sort of which is there, he has put his personal effort in trying to look at that tile. I remember he came to me, Dr. Saab, मैंने
जाके खुद जाके tiles choose की हैं. They will be appropriate for a kid's nursery. So this was so great about him. बहुत सारी तो आ गई थी tiles. He sort of said, नहीं, I want different ones. So, and it really turned out to be a great PICU, which was, I'm sure even the pediatric surgeons and all those people who referred their patients to us would vouch for that. He did have a lot of hurdles during the making of this PICU, but he was so firm about it. I mean, he knew what he was doing was right. So whenever he got these hurdles, he just stood firm about them. Though I would say he was never abrasive. But he had been a very competent person. He raised a pediatric intensive care unit with his own single-handedly and managed that thing very well. He continued to live in college for even 7 days without going back home to see that the early admissions which were there in the pediatric intensive care, they survived. He was very proud of them. Dr. Govil saw to its day-to-day functioning and taught the residents and nurses the nuances of pediatric ventilation and other aspects of intensive care. Dr. Govil has numerous research papers to his credit. Dr. Govil has written a chapter on cardiopulmonary resuscitation in IAP textbook of pediatrics and was very active in pediatric intensive care and critical care chapters of Indian Academy of Pediatrics. One of the most important academic contributions of Professor Govil for this university was to start the first fellowship of this university, that is in fellowship in pediatric intensive care. I am rather to be fortunate enough to be his first fellow of pediatric intensive care along with Dr. Kritika of some university in Gujarat, and we successfully did the fellowship. Unfortunately, I am the also last fellow to have done my fellowship with the Professor Govil. Dr. Govil didn't want his clinical skills to be confined to the college campus, but at the same time also didn't want to do anything that was not legal. As a result, took VRS in 2008 and went on contract to pursue his practice earlier at Krishna Medical Center and recently at Hiranya Medical Center. But there also more than half of his patients were treated free of cost. On 4th January 2012, just 4 days prior to his death, he was elected the president of Lucknow unit of IAP, for which he had a lot of new ideas and plans. He was a clinician par excellence. He established an instant rapport with his child patients and their families. He was a confident and popular speaker at national and regional conferences. And even when he used to go for giving lectures outside the university, all those people who attended the lectures were really praises about him. He was so clear in his thoughts. He would put everything in such a nice perspective, so it was clearly understood by everyone. On 8th January, the day of his demise, he was returning from this clinical meeting of Indian Medical Association. So actually, he died while working. In Yogesh's death, I've lost a real friend. His household was one where we could go in, barge in any time of the day and night, in whatever manner that we were dressed, and fight over things which otherwise did not matter. It was one of those unannounced visits that the planning for this Bareilly trip materialized. While we were returning from Bareilly, we were planning for what we do next. But luck did not rule it that way. And in a tragic accident of which I personally have no memory, we lost Yogesh. Although we were classmates, we became friends when he had a chamber. He shared a chamber with me at Krishna Medical Center. And many times I would find him
patients offering him his consultation fee and he refusing it. He was one of the very few people that I have known for whom money was just a necessity. He was never bothered about the amount of money required. He said that whatever little I make is enough for me and my family, who are very well looked after. He had no aspiration of becoming a millionaire or a multi-billionaire, and was very concerned about his patients and was fanatic about his love for the pediatric intensive care unit which he helped establish. I was fortunate that I did not see him after his death because I was in no position. I can only weep silently for his loss. Thank you. Now let's have glimpses of his family life. You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Dr. Govil was the eldest of 3 siblings. He was a complete family man. He got married to Mrs. Rashmi Govil in 1983. And of course he was a very dutiful son and dutiful father, of course. दोनों ही बातें थी. बच्चों के लिए भी जितना कर सकते थे किया ही उन्होंने, और हमारे साथ तो कर बहुत ही ज़्यादा. Very beautiful. मैं तो बल्कि वो जैसे मैं सत्संग में जाता हूँ शाम को ना हजरतगंज, तो वो क्लिनिक उसका यहाँ था हिरण्य में महानगर, तो महानगर इधर मैं वहाँ जाता हूँ. मैंने कहा मैं ऑटो से चले जाऊँगा. दोनों आप ऑटो पे रहें, हमको छोड़ के आएगा टू हर बात में बहुत हर वक्त तो कंसल्टेशन रहता करते. पापा कोई दिक्कत न हो, कुछ न हो, बहुत ज़्यादा. किसी ने मुझे मोबाइल नहीं रखता था पहले. मैंने कहा चले, उसने ला के दिया, नहीं आप रखिए. मैंने कहा क्या करेंगे? मैंने कहा वाह आपको जरूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, हम आपको कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए इफ आई वांट टू कॉन्टेक्ट यू, कहाँ से मिले? अब तो फिर आदत ही ऊपर गई, बगैर चलता नहीं है. लेकिन बीपी ने पूछ लिया था कभी कहाँ है आप, जरा भी देर हो जाए, मान लीजिए रिटर्न जैसे मिले लौट के हमको 8 बजे आना है, सब 8-10 जैसे आते हैं, नहीं देर हुई 8:30 बजे, उसने कहा फिर कहाँ है आप? वेरी कंसर्न. और सभी के लिए मिला के रखता था सब. फैमिली, छोटा लड़का जैसे हमारा है, लोग हैं, लड़की है, और सब लोग. और लड़का वो इंजीनियरिंग किया है उसने मणिपाल से, फिर अब वो वहाँ एक्सेंचर में सर्विस कर रहा है बेंगलोर में लास्ट 3.5 years. लड़की जो है वो मणिपाल से MBBS कर रही है, तो उसका आपके 10 जनवरी से उसका फाइनल प्रोफेशनल था, लेकिन वो 9th को डेट टू कम हियर, जिसको भी सब हो गया. Dr. Govil was a dutiful son, a caring husband, and a responsible father. He has left footprints into the sands of time, which will be guiding light for many. ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए. It is said that being a doctor is the most noble profession because you can serve other human beings by relieving their sufferings. But only a few of us know that Dr. Govil, besides offering medical services to people, had also put some Herculean efforts to bring about a radical change in our society. He realized the problems in the system and believed that many diseases and public health problems are merely a consequence of bad policies and can easily be removed by changes in the system and better governance. His children was not simply confined to his patients. He used to interact with school children and inculcate into them the feelings of humanity and nation building.
He believed that an educated child can only be an enlightened adult. देश की माटी देश का हवा देश की देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने देश के घर और देश के घाट देश के वन और देश के बाग सरल बने प्रभु सरल बने देश के तन और देश के मन देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने देश की माटी देश का जल हवा देश की देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने सब कक्षा 3 के हो या किसी दूसरी कक्षा के? रमापति है कक्षा 3 है। हाँ, सारे कक्षा 3 है। वो छोटी बच्ची वो भी कक्षा 3 है। रमापति बोले इसको तो वो तो बहुत छोटी है। बेटा तुम इधर आओ जरा, इधर आओ। नहीं तुम आगे बढ़ो। ये हाँ इधर आओ। कक्षा 3 की तरफ। Education is not the filling of a pail, but the lighting of fire. He, with others in Save Mother Association, used to go to this broad divider in Gomti Nagar and teach the laborers in street light. Another place where he used to teach was underneath this flyover. डॉक्टर साहब के बारे में यही काफ़ी कमेंडेबल ये था कि in addition to being a very soft spoken person, he could spare time for 2 activities, primarily one to teach people. इस विषय के लिए वो 9 से 10 हम लोग की टीम काम कर रही है, मजदूरों को 9 से 10 रात में पढ़ाने आते थे. कमेंडेबल ये था कि 8:55 पे he used to be here with his vehicle और हम लोग यहाँ से साथ में जाके वो जो अभी आपने जगह देखी वहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे. आइडिया वॉज कि पढ़ाते समय उन लोग की रीजनिंग डेवलप करी जाए कि हमारे लोग रीजनिंग के ज़रिए सोच समझ के वोट कास्ट करना शुरू करें. आइडिया वॉज कि जब वो लोग सोच समझ के कास्ट करते वोट तो फिर नॉन इश्यूज़ पॉलिटिकल मार्केट में बिकने बंद हो जाते हैं. और इसमें डॉक्टर साहब उनसे ज़रूर बात करते थे कि आप लोग का मेडिकल में इलाज में किसी की तबीयत अगर ख़राब हुई हो तो क्या खर्चा आया. देन यूज्ड टू से कि सरकारें तो कहती हैं कि हम लोग मुफ्त में इलाज करते हैं और एक्सपेक्टेड भी है कि मुफ्त में करें. आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग की इलाज ठीक से हो तो आप लोग सोच समझ के सही आदमी को दीजिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो किसी जाति का हो. डॉक्टर साहब के बारे में कमेंडेबल ये था कि इतने बिजी होने के बावजूद ही कुड स्पेयर 1.5 hours एंड ही यूज्ड टू से राइटली से कि 24/7 यानी एक सप्ताह में जो इतने घंटे होते हैं उसमें से 1.5 घंटा हम मेडिसिन प्रोफेशन के अलावा या और भी किसी प्रोफेशन में है उसके अलावा 1.5 घंटे निकाल के अपने मुल्क के निकालें और लोगों को शिक्षित करें. तो एजुकेशन एंड एजुकेटिंग पीपल वाज वन ऑफ हिज मेन इंटरेस्ट. लास्ट क्लास में ये था जैसा हमने बताया कि लास्ट क्लास में उन्होंने कहा कि मैं अपने कारपेंटर से एक फोल्डिंग ब्लैक बोर्ड बनवाता हूँ. हम लोग जो रोलिंग ब्लैक बोर्ड लेके जाते हैं वो फट जाता है कई बार. फोल्डिंग ब्लैक बोर्ड हम लोग कार में ले जा सकते हैं. पढ़ाने समय उसको आराम से खोला और पढ़ाया और पढ़ाने के ज़रिए हम लोग उन लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करें. दैट वॉज हिज लास्ट क्लास. इनफैक्ट एक बार तो ये हुआ कि ये जो फ्लाईओवर के नीचे रोशनी कम रहती है तो उन्होंने अपने कार के डायरेक्शन मोड़ के हेडलाइट ऑन किया और उस पर्टिकुलर एरिया में जब रोशनी है तो उस रोशनी में पढ़ाना शुरू किया. Dr. Govil also believed that educated political representatives can only bring positive change in the society and thus supported the Jan Rajya Party, a group of IITians and doctors trying to bring positive change in the politics. Dr. Govil was a dedicated environmentalist and for that he was part of Gomti Mitra Mandal. गोमती मित्र मंडल
एक हम लोगों का मिलने जुलने का और सारे मित्रों का समूह का नाम है। हम लोग क्लार्कवत के पीछे लखनऊ में गोमती किनारे देवरा घाट पर पर्यावरण के प्रति जागरूक और समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्ति सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर पर्यावरण के प्रति और समाज के जो जरूरी काम रह गए हैं, भूले भटके या उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, उनके ऊपर चर्चा करनी और उनको कैसे कराया जाए इस पर ध्यान देना, आपस में सहयोग से उन कार्यों को पूरा करना। इस कार्य में काफ़ी लगन से, मेहनत से, और उसमें विशेष डॉक्टर साहब का भी बड़ा योगदान रहता था। वही 10 एक साल पहले डॉक्टर गोविल मेरे साथ, हम श्रमदानियों के साथ जुड़े। हर रविवार को सुबह गोमती के किनारे श्रमदान करके कुछ सार्थक करने का जो प्रयास हमारा रहा है मित्रों का, डॉक्टर गोविल उसमें न सिर्फ सहभागी थे, आधारशिला थे वो हमारी। दीपावली में पटाखों का बहुत ज़्यादा शोर, उससे उड़ने वाले धुएं से लोगों को होने वाली परेशानियां, पटाखों का बारूद फटना और उसके बाद उन कागज़ों का नालियों में जाकर और नालियों द्वारा फिर गोमती में आना और गोमती भी दूषित होने, इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस पर एक विशेष जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया और जिसमें डॉक्टर साहब जाकर मौके पर स्कूल कॉलेजों में ये बताते थे कि जो हम खुशी के लिए पटाखा बजा रहे हैं वो खुशी ना होकर वो हमारे लिए दुख का और बीमारियों का कारण बनेगा, लिहाजा इससे बचें। और चूंकि वो डॉक्टर थे तो डॉक्टर की बात को लोग बड़ा ध्यान से सुनते थे और फिर उनका ये बताना कि दीपावली वाले दिन जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में लोग किस तरह अपने हाथ फटे हुए लेकर आते, गंभीर रूप से घायल होकर आते और उनको उस दर्द का एहसास दिलाना। His leisure and clean and healthy environment was also evident when it was after his efforts that this Birbal Sahni Park in New Hyderabad area was renovated in 2003-2004. Dr. Govil also played a pivotal role in preventing this pond at Hanuman Mandir in Aliganj from being sold at the hands of builders. He saw to its beautification and maintenance from then on. We can imagine how much dedication and effort would it take for a professor and doctor to go to such extent to preserve nature. But for Dr. Govil, all this came so naturally because of his firm belief that healthy societies can only thrive on healthy nature and environment. डॉक्टर साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम यहाँ ये भी किया, जो लखनऊ के सड़कों में जो लोग लावारिस चोट खाए हुए, फोड़े फिंसी निकले हुए, जख्मों से भरे हुए मानसिक रोगी, उन लोगों के ऊपर
निगाह पड़ी जब उनकी, तो उन्होंने आपस में आकर यहाँ पर सलाह मशवरा किया और उनके इलाज के लिए बात उठी। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि उन आदमियों को उठाकर हम रखें क्या और इलाज कैसे कराएं। इस जिम्मेदारी को डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबी से निभाया और लगभग पिछले 3-4 साल के अंदर हमने 150 से ऊपर लोगों को लखनऊ की सड़कों से उठाया है। उनको पहले जाके थाने से रिपोर्ट करवाना, फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराना, फिर मजिस्ट्रेट द्वारा उसको मानसिक चिकित्सालय भिजवाना, ये बहुत बड़ा कार्य था और वो डॉक्टर साहब की अहम भूमिका रही उसमें। और उसके बाद फिर मानसिक हॉस्पिटल में देर सवेर जब भी समय मिले उन्होंने जाकर उनका ध्यान रखना और अपने मित्र डॉक्टरों को बताना, उनकी बीमारियों को दूर करना। उसके अलावा फिर जब वो बोलने की स्थिति में और अपने परिवार के स्थिति की जानकारी और पता बताने की स्थिति में आ जाए तो उनका पता नोट करके उनके घर में भिजवाना। हमें ये जानकर बेहद खुशी है कि इस कार्य में हम 100 से ज़्यादा लोगों को उनके घरों पे पहुंचा चुके हैं। और पिछले कुछ सालों से लखनऊ की सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रोगियों के इलाज में उन्होंने जो योगदान किया वो कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। ये काम हम कर सकते हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी वार्ड में बातचीत करके ये व्यवस्था कराई कि इन रोगियों का इलाज हो सके और पिछले 4-5 सालों में 150 से ज़्यादा मरीजों का इलाज, ऐसे मरीजों का इलाज हो पाया है जो मानसिक रूप से प्रभावित थे और उनमें से लगभग 100 लोग अपने घरों को पहुंच पाए। ये सारा योगदान डॉक्टर गोविल का ही था और है। वो काम अब भी चल रहा है। कोई 10 लोगों का इलाज आज भी चल रहा है मानसिक रोगियों का लखनऊ मेडिकल कॉलेज के सेक्रेटरी वार्ड में। डॉक्टर गोविल के लिए जब उनके बारे में सुना कि उनका एक्सीडेंट हुआ और वो नहीं रहे, सबसे ज़्यादा धक्का ये लगा कि कितने लोगों के वो मसीहा थे। मैंने तो उनको 2003 से बहुत पास से देखा जब मेरी बेटी वहाँ 40 दिन आईसीयू में रही थी। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ उनसे सीखी, कितने धैर्यवान थे और कितने सारे बच्चों के लिए वो लगे रहते थे कि इसको इलाज मिल जाए, जिनको आर्थिक अभाव की परेशानियों में जूझ रहे थे। तो हरदम ये लगता था कि कैसे उनको बच्चों को मदद मिल जाएगी, क्या कहाँ से मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर गोविल एक इंसान ऐसे थे जो लगे रहते थे अपने प्रोफेशन के बाद। उनकी एक डोनर लिस्ट हुआ करती थी, पेशेंट के लिए फ़ोन करना कि आप ये मेडिसिन अवेलेबल करा दो, ये करा दो, और उनके लिए नेट पे बैठ के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे कि कौन सी बीमारी है, इसका क्या इलाज है और हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक डॉक्टर तो भगवान होता ही है, लेकिन डॉक्टर के अलावा वो जिस तरीके से करते थे ऐसा लगता था वो उनके परिवार का कोई सदस्य जो बीमार हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनसे हमने सीखी। सबसे ज़्यादा धैर्य रखना, पेशेंस। डॉक्टर गोविल सभी की बात बहुत आराम से सुनते थे और उसका बहुत मुस्कुरा के जवाब भी देते थे, जिससे लगता था सारी तकलीफ जो है वो ख़त्म हो गई। ये हर इंसान के अंदर नहीं होता, क्योंकि एक ही चीज़ को लगातार कई बार कोई पूछता है तो हर आदमी इरिटेट हो जाता है, लेकिन डॉक्टर गोविल ऐसे नहीं थे। जीवन में अगर कुछ सीखा है तो उन्हीं से सीखा है और हमारे आदर्श हैं, क्योंकि आज वो नहीं है फिर भी हम डेली उनकी बातों को याद करते हैं और यही सोचते हैं अगर आप सेवा का कार्य कर रहे हो या आप अपने कर्म को कर रहे हो तो साथ में ये भी सोचना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति के लिए कितना काम आ रहे हो। और हर चीज़ पैसे से नहीं होती। वो हरदम यही कहते थे, पैसा नहीं होता, आपको जब जिस काम से सुकून मिलता है वो आप काम करिए। तो जो हमारी फाउंडेशन की शुरुआत भी डॉक्टर गोविल के इंस्पिरेशन से हुई और आज उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने कहा था आगे बढ़ती रहिएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो उसी ज़रूरत और उसी सेवा के भाव को लेके आज हम उनको याद करते हुए यही काम लगातार करने की कोशिश करेंगे। Sir was also associated with Georgian Hope
right from its inception in May 2008. He not only provided inspiring guidance, but was also a constant source of support to whom we could approach anytime for any kind of help, being rest assured that our request would never be turned down. He kept on motivating us for tree plantation, blood donations, establishing ran baseras, and working for needy and poor in whatever possible ways. His thoughts and untouched realms of his personality. Dr. Y.C. Govil was an epitome of simple living and high thinking. He believed in practice, achievement, and expertise. In all those respects, I think he was a true gentleman, a wonderful person, and a great colleague to have. Not only that, I think he was a teacher par excellence. His residents, his students will all vouch for that. And he taught with a passion. He would say, Dr. Saab, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है. So I mean, this would come across in his teachings also. His greatest hobby was to keep his knowledge updated. और उसको इतना पढ़ने का एकेडमिकली इतना शौक था कि सिर दर्द हो जाए मान लीजिए तो पढ़ने बैठ जाता था. इससे मेरा सिर दर्द हो जाता था, पढ़ने से सिर दर्द हो जाता. इतना इतना उसको शौक था पढ़ने का. और जब भी ये लेक्चर्स देते हैं, जैसे बाहर जाते हैं कहीं जब बुलाते हैं, तो वही होता है, पढ़ता रहता है. लेकिन नहीं, जब भी जाएगा पूरा उसमें इंटरनेट में देख के ये वो अप टू डेट करके, जो सब्जेक्ट कई बार दिया चुका है उसको भी पूरा करके बिल्कुल अप टू डेट करके नेट से लेके सब जो लेटेस्ट है वो करके. Apart from academic hobbies, Dr. Govil was a very happy-hearted and social man. Dr. Yogesh Govil was one of the gems of our KGMC MBBS batch. We joined in 1974, and the kind of person, the kind of doctor, the kind of teacher he was, I guess very few people will be of his type. And often he had a very humorous bent of mind also. Not only he was very good in his profession and teaching and innovations, but he had some humorous bent of mind also. I can recall the first day when I was going to King George's Medical College after getting selected in PMT. First I was selected in another medical college, and I later got transferred to KGMC. And I was going on a tempo. I got this tempo from Hazratganj, and the person sitting next to me started talking to me and behaving in a manner as if he was my senior. So this was Yogesh Govil. He just asked my introduction, and then he told me that he is my senior, and he kept on taking a mild introduction till we reached Medical College crossing. And when we got down from that vehicle, then he told me that, look here, I am your batchmate, I am not your senior. So we had a very good laugh, and from then on he became one of my best friends. जो ख़ास बात डॉक्टर योगेश गोविल की थी वो ये थी कि बहुत हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमेशा रहती थी. हम लोगों के टेस्ट होते थे, वाइवा वासी होते थे, और बहुत ही लाइटली वो उसको लेते थे. ऐसा नहीं था कि लाइटली के मतलब पढ़ाई ना करें, पढ़ाई तो उनकी हमेशा बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन चेहरे पे इस तरीके के भाव नहीं आते थे कि बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएं, और हमेशा मुस्कुराहट रहती थी. और हम लोगों को भी वो इस तरीके से बिहेव करते थे ताकि हम लोगों की भी जो टेंशन था वो एकदम रिलीव हो जाता था. और ख़ास बात ये थी कि वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ जो उनका सोशल इंटरेक्शन था उसमें भी कभी कमी नहीं आती थी. वो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अगर कोई कार्यक्रम हमारे बैच में रखा गया है, डॉक्टर गोविल अपनी मिसेस के साथ हमेशा सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते थे. इतना ही नहीं, मैं एक बात जो ख़ास करके बताना चाहूँगा वो ये थी कि 1999 में हम लोगों की सिल्वर जुबली रीयूनियन हुई थी हमारे बैच की, और डॉक्टर गोविल और हम दोनों ने ही बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. और हम दोनों ही एक ऐसे सेंसिटिव
कामों को देख रहे थे कि अगर उसमें कुछ कमी आ जाती तो शायद दोनों को ही एक बैड नेम मिलता। और जो ख़ास बात थी वो ये थी, डॉक्टर गोविल ने की जो भूमिका थी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। और सभी लोग जब हम लोग की बैच मीट ख़त्म हुई बहुत खुशी खुशी यहाँ से गए। उन्होंने इसके अलावा जितने भी हम लोग की गैदरिंग्स हुई, सोशल गैदरिंग्स, जिसमें हमारा 1974 बैच बहुत ही एक्टिव रहा, उसमें हमेशा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। जिसमें कभी भी उन्होंने, कभी शायद ही ऐसा हो जिसमें वो ना आए हों, नहीं तो हमेशा डॉक्टर योगेश गोविल सब परिवार, जब परिवार में बच्चे बाहर चले गए तब वो अकेले हस्बैंड वाइफ दोनों जने आते रहे। तो इस तरीके से हम लोगों का यूनियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन रहा और हमेशा वो मौजूद रहते थे। मैं जो आखिरी हम लोग की अभी इंटरनेशनल जॉर्जियन मीट जो दिसंबर में इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई थी, और उस इंटरनेशनल जॉर्जियन मीट में एक सेशन उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में होस्ट किया। और जिस तरीके से उन्होंने उस सेशन का संचालन किया, उससे फिर हम लोगों को अपने पुराने दिन पूरे पूरे याद आ गए। और ऐसा नहीं लग रहा था कि आज हम लोग कितनी उम्र के हो गए, कितना बड़ा हमारा परिवार हो गया और हम लोग कहाँ कहाँ पर हैं। ये एक उनकी बहुत बड़ी खूबी थी और इस खूबी को हम लोग सदैव ही याद रखेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जितने भी बैचमेट हैं वो अभी भी डॉक्टर योगेश गोविल को, जो उनका एकेडमिक्स में कंट्रीब्यूशन रहा और सोशल फील्ड में जितने वो एक्टिव थे, उसको हम लोग हमेशा ही याद रखेंगे। For his patients, he was God. He would take such intense interest in his patients. He would maybe come even 3 to 4 times in the evenings at times. Even at night, he was always available for his patients. He believed in giving minimum medicines, but would take personal care of each and every patient. He would maintain a record of people who helped patients and would call them personally whenever needed for a patient. He would continuously motivate people to help the underprivileged. Our department has really lost a wonderful human being, a great colleague, and a teacher par excellence in his loss. His loss is a very great loss to the university. He had been the asset to this university. We lost a very good teacher, we lost a very good clinician, we lost overall a very, very good human being. I feel very sorry for him, and such type of people are not born again and again. That's what I have to say about him. This is a stone at Devaraha Ghat which has been put forward by his friends underneath the tree which was planted and nurtured by Dr. Govil. मित्र की हैसियत से जो क्षति हमारी हुई है उनके न रहने से वो अपूरणीय है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उनका सद्भाव, उनकी जागरूकता, उनकी विनम्रता, उनकी शिष्टता और सहजता। सच तो यह है कि किसी को ये लग सकता है सुनने वाले को कि ये मात्र औपचारिकता में कही गई बातें हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि ये सारे गुण उनके अंदर फूट फूट के भरे हुए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्पिरिट वो छोड़ गए हैं हमारे लिए, जो भावनाएं छोड़ गए हैं, हम और उनको जानने वाले सभी लोग मिलजुल करके उन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते रहेंगे। इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा उनके अंदर था, चीज़ों को सुधारना चाहते थे वो। और मैं समझता हूं कि हमारा ये धर्म है, बनता है कि हम उनकी स्मृति में उस बात को आगे बढ़ाते चलें और जैसा जो कुछ वो करना चाहते थे इस देश समाज के लिए हम कर सकें, तो तभी हमारे अपने जीवन की सार्थकता होगी और वही सही मायने में एक श्रद्धांजलि होगी अपने मित्र डॉक्टर योगेश गोविल के लिए। His untimely death has stunned us
and we cannot blame God for that he can commit mistakes. So let us feel that Dr. Govil himself was divine. Dr. Govil's sudden demise has left a void not only in the pediatric fraternity in the country, but also in so many lives that he had touched. At this moment, we pledge to follow the path he has shown us and try to fulfill the dreams he had seen for the society and the nation. Death comes to all, but great achievements build a monument which shall endure until the sun grows cold.